session of the event under the guidance of Mr. ASHWIN Balani, the current CEO at First Impression Technologies, expert in technology, Android app development, MATLAB-based signal processing, network framing, PHP formats, etc. He started FreeTech in 2009 and is spearheading the design and development division. Some of his valuable contributions include training method modules for Indian Army, part of the design team, the development of a graph database, testing engineer for Facebook and surveillance app for national tracking. He is also an active member of startups and leadership programs. Mumbai chapter and was awarded as the most dedicated entrepreneur in the year 2016 and 17 and at Mumbai. Working on technologies like Android, iOS, PHP, MySQL, Oracle, etc. Developed over 100 projects for local, national and international clients. That's all from my side, sir. I would request you to please start with the session. Good afternoon, everyone. So we'll not we'll use our time right now because we are running a bit late. We will start the session directly with the practical hands-on session. So I think most of you know Python. Yeah, a quick revision of Python. Every one of you know how to write if in Python, if else, simple. You know how to do for loops in Python. You know how to do array in Python. Okay. So what I'll do is I'll just start with the so please open up your browsers because you might not be having Python compiler installed on your machine. Just open up the browser and go on Google. And just write over here, online Python compiler. I'll just open the first one, program this compiler. And you should be good to write Python code now on the machine. Okay. Now, one small request to everyone. Each of you should do the code individually on your own machine so that you get the hands-on experience. Today we'll be doing something like bio-inspired computing. I think most of you might be knowing what bio-inspired is. Yes or no? Okay. I'll just revise that for you. You know genetic algorithm, GA, or have you heard of PSO, particle optimizer? Okay, so we'll be doing a sample genetic algorithm in a class today. What GAs will do? Suppose that you have a problem and you want to find the optimal solution of that problem. Okay, let's take an example of a routing problem, network routing problem, where you have 20 nodes in a network and you want to find out the best path from node A to node B. Okay, so एक network में अगर 20 nodes हैं और आपको हर एक के में path find करना है, so there will be n number of combinations. Yeah, and finding the most optimal path between those combinations is a big task that can be solved with multiple algorithms. But genetic algorithm or bioinspired algorithms follow a stochastic approach. Okay, stochastic का मतलब क्या होता है? Random approach. Means it will first tell you a rough path कि आप ये paths ले सकते हो. इन paths से फिर धीरे-धीरे use करके at the end of the solution you get the final path. Okay, so something like that we'll be doing today in our system, not with routing but with some other problems. Okay, so सब यहाँ पे आया compiler? Yeah. Now just tell me, how do we write an if condition in Python? Let's say if I want to, सबको दिख रहा है last में? Yeah. Suppose I want to write a simple if condition, age equals to 16. If age is more than or equal to 18, colon, print, you can vote. Else
print you cannot vote. Simple condition, yeah. आप ये अपने type कीजिए so that you know what kind of compiler I'm using. So it's a very simple code. आपने variable define कर लिया age, उसी value आ गई 18. Or if age is more than equal to 18, so you can vote, else you cannot vote. I think most of you might have done it in your lab practicals, but we're doing it only for the sake of getting a bit used to the compiler. Okay. Once you are done, you click on run, and you should be able to get the output cannot vote without any errors. Okay. Over here, two things to know. One, there are no brackets. There is a colon sign over here after if. Second, there is a tab over here. This tab will come automatically. आपको tab खुद टाइप नहीं करना है, tab अपने आप आएगा. आपको सिर्फ यहाँ पे आने के बाद जब एंटर दबाएंगे तो बैकस्पेस दबाना है ताकि आप else लिख सकें. Okay? Is this clear to everyone? Yeah. I hope it's clear because most of you might have done this thing in your Python practice. All set? Yes or no? Yeah. तो क्या आउटपुट? Okay. क्या आउटपुट आया आपके पास? Cannot vote. Everyone got the output. Perfect. I will just run it. Cannot vote and come on main.py. Next, we will just have a simple condition of a for loop. Okay. So before doing for loops, loop दो टाइप के होते हैं, right? For and while. तो मालूम है, yeah. For loop क्यों होता है use? When you have a fixed number of items to scan, तो for loop use करते हैं. अगर आपके पास items का limit fixed नहीं है and you want to do it infinitely, तो while use करते हैं. Okay. For the sake of the class, we use a for loop. Let's say I want to define an array in Python. Say a equals to 1, 2, 3, 4, 5, and 6. इस तरीके से Python में array बनाता है. A equals to in square bracket the number that you want 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Has anyone done for loops in Python? कभी किया है? Yeah. Syntax क्या होता है? For variable name in range 0, length of the array. So what we do is simply do for I in range 0, length of A. तो इससे क्या हो जाएगा? जो array A है उसकी length कितनी है? 6. So it will go from 0 to 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 तक जाएगा I का वैल्यू. और अब हमको ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन से इवन थे, कौन से ऑड. क्लियर? जस्ट फाइंड विच इज यूज्ड ऑड. इट्स वेरी वेरी इजी. तो यहाँ पे क्या ले जाएगा? क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? Get ready. If condition, if the value mod 2 is 0, so even else odd. Clear? Are you following that? Anyone? Yeah. So क्या करेंगे यहाँ पे? If a of I mod 2 is double equal to 0. If a of I mod 2 is double equal to 0, मतलब अगर a of I मतलब a का current element है वो mod 2 मतलब 2 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर मिलेगा अगर वो 0 है तो ये क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा. तो क्या बोलेंगे? प्रिंट परसेंटेज d इज इवन. ये परसेंटेज d क्या होता है? इंटीजर. तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? बाहर निकल के परसेंटेज साइन a ऑफ I. सी क्या किया हम लोग ने यहाँ पे? प्रिंट परसेंटेज d इज इवन. और ये परसेंटेज d क्या है? जो करंट एलिमेंट ऑफ a है. Are we clear? We're doing very simple stuff over here. हमने क्या किया है? चेक किया है if a of I mod 2 is 0, इसका मतलब कि उसका डिवीजन बाय 2 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम बोलेंगे इट्स इवन. एल्स प्रिंट कर देंगे इसको
is odd. ये रन करने के बाद आप कोड लिख लीजिए। रन करने के बाद तो मिलना चाहिए आउटपुट 1 is odd, 2 is even, 3 is odd, so on. हो गया? तो एरर दिखा रही थी क्या यस कहाँ पे आप एरर दिखा रहे हैं? देखिए तीन चार इश्यूज थे जो कि फेस किया आप लोगों ने शायद। एक तो ये इंडेंटेशन, मतलब जब आपने यहाँ पे एंटर दबा देते एल्स के लिए तो यहीं पे वो एल्स लिख रहे थे। ओके, इससे क्या हो जाएगा, इफ के अंदर एल्स आ जाएगा। एल्स कभी भी इफ के बाहर होता है, इफ एल्स या एल्स से करके होता है। तो यहाँ पे इफ के अंदर एल्स नहीं आना चाहिए, वो एक इशू आ रहा था। आई थिंक रेस्ट एवरीवन वाज ओके। दिस इज क्लियर? या अब मुझे बताइए ये जो हमारा ए आए है कितने एलिमेंट? 6, राइट? अब अगर मुझे एरे इनिशियलाइज करनी है तो 100 एलिमेंट, ओके, अगर वांट टू मेक एरे विद 100 एलिमेंट्स तो क्या मैं वहां लिखूंगा 1 2 3 4 5 to 100? नहीं ना। सो यहाँ पे हमको एक पाइथन एक सिंटैक्स देता है, अगर मेरे को एक एरे इनिशियलाइज करना है विद से ऑल वैल्यूज 0, ओके, आई वांट टू इनिशियलाइज एन एरे ए with all the values as 0, तो क्या बोलता है वो? You give a equals to 0
multiplied by 100. जो आपका जीरो वैल्यू है वो स्क्वायर ब्रैकेट में डालिए इनटू कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए वहां से देखिए। अगर आप ये करेंगे तो आपका जो ए आएगा होगा उसमें 100 एलिमेंट्स आ जाएंगे फिर 0। ओके, सो वी आर डन विद सम बेसिक्स ऑफ पाइथन कि कैसे उसमें वेरिएबल्स वगैरह आते हैं, सम बेसिक इफ कंडीशन, सम बेसिक एल्स कंडीशंस एंड सम बेसिक फॉर लूप्स। ओके, इतना सफिशिएंट है हमको आज का जो बायो इंस्पायर्ड मॉडल पढ़ने के लिए, इतना सफिशिएंट। ओके, इसके अलावा कुछ और रहेगा तो भी कंप्यूटर का कैसे करता है। ओके, सो फिलहाल we'll just remove this particular code from here and I'll just open a paintbrush. Okay, so let's see कि bio-inspired computing काम कैसे करता है, ये bio-inspired को क्या काम करने वाला है। अब सब लोग CS के या CS and AI या so आप लोगों के सिलेबस में there was a problem called as knapsack problem. Okay, knapsack problem क्या बोलता है? You have a sack of a fixed weight. Okay, let's say कि आपका sack है इसमें आपका weight fixed है और इस sack में you can store weight up to 100 kgs. Okay, और आपके पास दूसरे weights हैं यहाँ बहुत सारे। Let's say first weight is 10 kgs, 20 kgs, 30 kgs, 40 kgs, 50 kgs. Okay, so I'll just name the weights as 10, 20, 30, and say 25, and say 5. Clear? प्रॉब्लम क्या है? सैक है जिसमें मैक्सिमम कितने वेट हो सकता है 100 kg और मुझे कौन से वेट्स अवेलेबल है 10, 20, 30, 25, 5. ओके, और मुझे ये 100 kg के वेट को मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 वेट से भरना है। मतलब आई कैन ओनली यूज 5 वेट्स, these weights can repeat or can not repeat, all depends upon us. ओके, तो मुझे बताइए कि मुझे 5 वेट्स यूज करने हैं तो कौन से 5 वेट यूज करना है? मैक्सिमम 5 वेट्स। समझे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ये सैक को इन वेट से भरना है और इनमें से मैं 5 वेट्स यूज कर सकता हूं मैक्सिमम। आई कैन यूज 4 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, बट ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि वो पूरा का पूरा सैक भर जाए। ओके, सो कैन एनीवन गिव मी अ सॉल्यूशन? 20 के 5 वेट, so 20, 20, 20, 20, 20, 20. That's one solution. Is there anything else? So your solution? Can I say 20, 30? Then 20, 50. 50, 50 is 100. What else? 25 4 times. 25, 25, 25 and 25. What else? 30 and 30 and 30 and 30. So for the same problem with the same input, we have multiple solutions. Okay, इनमें से कौन सा solution correct है, कौन सा incorrect है, उससे फर्क नहीं पड़ता, but सारे solution का output right ही आएगा। ठीक है, इसमें से ये first solution है, इसमें 520 है, that is the most inefficient solution, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक ही को 5 बार यूज कर रहा है, नंबर ऑफ वेट ज्यादा बढ़ेंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगा। जो लास्ट सॉल्यूशन है उसमें 3 सेम वेट्स है, वो भी एक ठीक सॉल्यूशन है। फिर आपका जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, these are good solution. ओके, सो अब ये तो बहुत सिंपल था कि 5 वेट्स है, 100 किलो है और रिपीट करना है, आप कर सकते हो। अज्यूम कीजिए कि ऐसा एक प्रॉब्लम आता है
कि मेरे को मेरे घर के एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। मतलब सैलरी आ रही है 1 लाख रुपए और उस 1 लाख में मुझे ट्यूशन फीस भी भरनी है, रेंट भी निकालना है, घर का बच्चों का खाने पीने का भी निकालना है, भुगतान नहीं है। तो वो भी एक मैप सेट प्रॉब्लम है। और उसमें कौन से चीज को कितना प्रेफरेंस देना है वो मुझे जेनेटिक एल्गोरिथम से ऑप्टिमाइज करना है। आज क्लास खत्म होते होते हम वहां तक पहुंचेंगे, बट फॉर नाउ फॉर द सिंपलिसिटी हम लोग ये प्रॉब्लम को ट्राई करने चाहिए सॉल्व करना। क्लियर? ओके, लेट्स सी हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ जी। जी क्या बोलता है, आपके पास जो इनपुट्स है आप कोई इनपुट में से रैंडमली कोई भी इनपुट यूज कर लीजिए। ओके, सो आई जस्ट रिमूव द सॉल्यूशंस फॉर नाउ एंड आई जस्ट सिलेक्ट सम रैंडम इनपुट्स। मैक्सिमम कितने वेट्स हैं? 5। सो इन 5 में से मुझे रैंडम इनपुट्स चूज करना है। ओके, लेट्स से मेरा फर्स्ट रैंडम इनपुट था 5, 25, 30 एंड 25। ये मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया फर्स्ट? फर्स्ट हो गया सॉल्यूशन। ओके, इसको निकालते हुए मैंने कोई एल्गोरिथम लगाया है, रैंडमली कोई 4 बिट यूज कर दिया। कोई और बताइए ऐसे रैंडम सॉल्यूशन? राइट, 10, 20, 25, 30। और बताइए 35, 25 and 10. Okay, we have got 3 different solutions which we have found randomly. Yes or no? Clear हो गया? Okay. अब इस सिनेरियो में इस जो हमने बनाया है, ये 3 जो आ रहे हैं इनको हम लोग बोलेंगे स्टोकास्टिक सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे इसको? स्टोकास्टिक सॉल्यूशन, या इसको बोलते हैं पॉपुलेशन साइज। इन टर्म्स ऑफ योर कमेंटेशन फॉर द पॉपुलेशन। ओके, अब जीए क्या बोलता है कि आप सॉल्यूशन जब निकालें, so you make sure that you select the solution which has the highest fitness value or which has the best fitness value. Okay? अब इस ये हमारा सॉल्यूशन आ रहा है पहला वाला 5, 25, 30, 25। ये सॉल्यूशन फिट है या नहीं है ये समझना पड़ेगा। जो इसका वेट का सम आएगा, अगर वो सम ने पूरा का पूरा फिट कर दिया साथ, तो सॉल्यूशन फिट है। अगर नहीं फिट किया तो सॉल्यूशन अनफिट है, राइट? तो हमारे फिटनेस रहेगा ना, एफ जो निकालेंगे हम लोग, वो रहेगा मैक्स वेट माइनस सम ऑफ वेट्स। क्या रहेगा फिटनेस? 7 में कितना आ सकता है? 100 किलो। और हमारा सम कितना आ रहा है? 5 + 25, 30, 30 और 30, 60, 25, 85. Okay, so what will be the fitness value? 50. So fitness हो गया यहाँ पे। All clear with that? Yes or no? Yes. इसका fitness कितना हो जाएगा? 30 and 20, 50, 60. Again 85. Fitness is 50. यहाँ पे कितना fitness हो जाएगा? F should be 30 and 60. All clear? All clear with that? वो डिटेल क्यों नहीं है? अगर मैं किया हुआ ये ठीक है? नहीं? Okay. Okay. Now, अब इन सॉल्यूशंस में से आपके हिसाब से ये 3 सॉल्यूशंस हैं, इनमें से सबसे बेकार सॉल्यूशन कौन सा है? कौन है? सेकंड और थर्ड? थर्ड। व्हाई थर्ड? क्योंकि वो सैश को बहुत कम भर पा रहा है, बहुत सारा स्पेस खाली है सैश। ओके, तो उस सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए जीए बोलते हैं कि आप निकालिए फिटनेस थ्रेशोल्ड। ओके, थ्रेशोल्ड क्या रहेगा? सम ऑफ ऑल द फिटनेसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, सम मतलब क्या? 15 + 15 + 30 दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 3। तो हम निकालेंगे इसके बाद में एफटीएच व्हिच इज सम ऑफ ऑल वेट्स or sum of our fitness divided by number of solutions. Okay, so sum of it कितना हो रहा है हम लोग का? 60 divided by 3 which is how much? 20. 60 by 3 is 20.
60 divided by 3 is 20. Clear? अब इनमें से कौन से सॉल्यूशंस हैं जिनका फिटनेस 20 से कम है? 1 and 2, इनको बोलते हैं हम लोग क्रॉस ओवर सॉल्यूशंस, मतलब इन सॉल्यूशंस को हम लोग डायरेक्टली आगे पास कर देंगे। ओके, जो थर्ड सॉल्यूशन है जिसका फिटनेस 20 से ज्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रेट सॉल्यूशंस, मतलब हम उसको मॉडिफाई कर देंगे आगे। क्लियर हो गया चीज? सो इसमें एक ऐसा लिख सकते हैं, अगर जो एफटीएच का वैल्यू है या अगर जो फिटनेस का वैल्यू है वो एफटीएच से ज्यादा है, अगर फिटनेस का वैल्यू एफटीएच से ज्यादा है तो सॉल्यूशन क्या है? क्रॉसओवर न्यूट्रेट। अगर फिटनेस ज्यादा है, फिटनेस ज्यादा है मतलब क्या है कि जो सम आ रहा है वो ज्यादा है, मतलब जो हमारा सैक है वो कम भर रहा है। ओके, तो क्या फिटनेस में थ्रेशोल्ड तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रेट। एल्स क्या बोलेंगे? क्रॉस। और क्लियर? यस और नो? सिंपल है, हमने क्या किया? रैंडम वेट निकाल लिया, सम निकाल लिया, अगर उसके बाद फिटनेस निकाल लिया, फिटनेस निकालने के बाद में थ्रेशोल्ड निकाल लिया। अगर थ्रेशोल्ड ज्यादा है इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर फिटनेस ज्यादा इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है, उसको हम लोग को न्यूट्रेट करना है। व्हाट इज इट? ऐसे करना है प्रॉपर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रेट? इसमें से कौन सॉल्यूशन करना है न्यूट्रेट? लास्ट वाला। यस और नो? या तो जी क्या बोलता है? म्यूटेशन के लिए क्या कीजिए आप? यू रिप्लेस द सॉल्यूशन विद अ न्यू सॉल्यूशन। ओके, जो आपके सॉल्यूशन आया उसको नए से रिप्लेस कर दीजिए। ओके, तो गिव मी न्यू सॉल्यूशन फ्रॉम दिस। कोई और सॉल्यूशन बताइए रैंडमली। 30 20 25 ओके, कितना हो जाएगा इसका सम? 85 आएगा है। 85 में थोड़ा सा चेंज करना है, we just make it 25 and say 30 20 30 and 10 90। अब इससे कितना मेरा फिटनेस वैल्यू? कितना आएगा? सम ऑफ ऑल 90, 100 में से 90 का 10 बचा, तो f क्या है हम लोग का? 10, मतलब 100 minus 90। और ये क्लियर? ओके, और जो बाकी दो सॉल्यूशन उसको हम चेंज करना है क्या? नहीं, उसको हमको डायरेक्टली आगे पास करना है प्रॉपर। ओके, अब हम लोग की जो तीन सॉल्यूशन थे वो ये हो गए। अब इसका बताइए क्या आएगा थ्रेशोल्ड? 15 plus 15 30 plus 10 40 divided by 3, but how much? I think 40 by 3, 13.333। अब देखिए क्योंकि थ्रेशोल्ड 13.333 आ गया, तो अब जो पहले के दो सॉल्यूशंस थे वो क्या हो गए? वो भी न्यूट्रेट, मतलब अब नेक्स्ट टाइम जब आप दो घुमाएंगे उस केस में आप क्या करेंगे? इसको भी चेंज करेंगे, फर्स्ट वाले को भी और इसको भी चेंज करेंगे। अभी क्लियर? ये चीज होते रहेगी बार बार जब तक कि या तो आपका फिटनेस का वैल्यू 0 ना हो जाए, मतलब आपको कोई भी मिल जाए, या तो आपकी न्यूट्रिशन खत्म ना हो जाए। क्लियर? ये जो हमने काम किया ना कि if more than threshold to mutate as crossover, फिर से लूप घुमाया, इसको बोलते हैं एक इटरेशन। ओके, in your GA code you will be fixing number of iterations as 5 10 15 20, and at the end of the last iteration you will be getting the best solution. Are we clear? Yes or no? Yeah, okay, इसमें कोई डाउट किसी को? Decide the number of iterations? Yes, you decide two things. One, with number of solutions that you want. You have 3 solutions there. You can have 4 5 6 10 as per your requirement. Possible that we have a perfect fitness value?
in cases where you have a fixed solution, like here, you can get a perfect value. But in cases where you don't have a fixed solution, like the routing problem, वहाँ पे नहीं मिल सकता, मिल सकता नहीं मिल सकता. Decision making या तो वहाँ आपको देखना पड़ता है कि आपका फिटनेस की वजह कितनी आ रही है. अगर आपको लगता है कि वो फिटनेस बहुत क्लोज है, तो आप यूज कर सकते हैं. Got the point? Yes. Okay. So we will be modeling this particular thing in our Python code. Okay. So what I will do is I will first write the code by myself, and you will write it with me as we are doing it. उसके बाद modification आपको अपने आप करेंगे. Okay. So make sure whatever code I write, you write it. I'll do it. Okay. If you want, you can take a screenshot of this particular screen because it will be easier for you to refer later. Okay. If you want to just take a quick snapshot of this, and it will be easier for us to do it. All done? Okay, just keep the screenshot handy with you so that whenever you have a confusion, we can. Now, with the knowledge that we gained in the session previously, with that knowledge in hand, we will do some initializations. Come to your Python compiler over here and delete everything. Just keep the compiler blank. Okay. So, what happens? Tell me. हम लोग का जो solution है, हम लोग का जो problem है ना, एक्सेप्ट प्रॉब्लम, उसमें first input क्या रहेगा? Weight, right? So let's say we initialize weights equals to, we take the same problem जो हमने लिया था पहले, and we will try to solve that now. Weights might be 10, 20, 30, 25, 5. So we'll make 10, 20, 30, 25 and 5. All set? हमने देखा था how to arrange Python, हमने फॉलो किया था, हम लोग वही यूज कर रहे हैं वेट्स array. ओके, दूसरा इनपुट क्या रहेगा? Total weight. Yes, so we're going max weight. Okay, yes, start with a max weight. So just to make it easier, I'll get max weight or max W. कितना max weight है हम लोग का? 100. और क्या इनपुट है हमारे पास यहाँ पे? Number of weights, 5. Okay, but can we get NW? But we didn't select 5 weight. That's the max number of weights. You can give 5 or 4 as per requirement. See, why we are doing that? Because we need to have some limit. कितने weights पे आना चाहिए. So just make some weights as 5 or 4. As you require, you can do it. All done? इनको बोलते हैं, ये तीन चीजों को बोलते हैं हम लोग प्रॉब्लम की इनपुट्स. ओके, अब आप लोगों में से बहुत लोग वायरलेस पे काम कर रहे होते हैं. वायरलेस में क्या होता है, आप राउटिंग करते हो तो you have number of nodes, ये एक इनपुट है. नोड का लोकेशंस ये इनपुट है. नोड की एनर्जी ये इनपुट है. नेटवर्क के डायमेंशन ये इनपुट है. ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम इनपुट या टास्क इनपुट्स. क्लियर? अब व्हाट्स नेक्स्ट? यहाँ पर कितने सॉल्यूशन निकाले हैं आप लोगों ने? 3 सॉल्यूशंस. So there should be something called as number of solutions. Yes. So let's say we give it ns equals to 10. और हम लोगों ने जब ये लूप घुमाया था एक बार, दो बार, तीन बार, तो हम लोग के पास में नंबर ऑफ इटरेशंस थे. ni equals to 10. You can take 10, 5 as per requirement. I'll just take ni equals to 5. मतलब लूप 5 बार घूमेगा और हर लूप में कितने सॉल्यूशन बनेंगे? 10 सॉल्यूशन. कौन क्लियर? इसको बोलते हैं, जो हमने निकाला है अभी, ऑप्टिमाइजेशन इनपुट्स. जो इनपुट यूज करेगा हमारा ऑप्टिमाइजर, उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजर इनपुट्स. ऑल सेट? ओके. अब मुझे बताइए, व्हेन यू विल बी राइटिंग द कोड
और when you are modeling your code, आपको number of bits शो करने के लिए क्या करना है? 5, 25, 25 शो करना पड़ेगा, फिर उसका फिटनेस चेक करना पड़ेगा, राइट? इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिट वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हमको ट्रांजिशन में करने वाले हैं, ओके? सो व्हाट आई विल डू इज सॉल्यूशंस, मतलब ये एक, दो और तीन, राइट? अब यहाँ पे तीन केस में हमारे पास तीन सॉल्यूशन मिल रहे हैं, हमारे केस में कितने मिलेंगे? यहाँ कितने मिलेंगे? 10, ओके? अब क्या मुझे पता है कि सॉल्यूशन में क्या आने वाला है? नहीं, तो आई थिंक दिस दैट इज 0. व्हाट आर द सॉल्यूशंस इज 0 multiplied by ns. तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? इट विल बी एन array of 10 elements with all elements as 0. और set what else? और क्या रहेगा हम लोग को? array का fitness, yes, so again fitness will also be an array, so I will say fitness equals to 0 into ns. all clear? तो हमने क्या विजुअलाइज किया? पहले प्रॉब्लम की इनपुट, फिर टास्क इनपुट, देन ऑप्टिमाइजर की इनपुट्स एंड देन टास्क वेरिएबल. अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक सब सिंपल है, हमने यहाँ पे सबसे इनिशियलाइज किया, ओके? अब जो मेरे सॉल्यूशंस आएंगे वो सॉल्यूशंस रैंडमली आएंगे, यस? तो पाइथन में एक लाइब्रेरी है, रैंडम लाइब्रेरी, वो तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी. अब आपकी इच्छा है, यू कैन इंपोर्ट इट हियर बाय सेइंग इंपोर्ट रैंडम, और इफ यू वांट यू कैन इंपोर्ट एट द टॉप. यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, wherever you're comfortable. Just write import random, it will import the library random. अगर आपकी इच्छा नहीं करना है, नहीं कीजिए, ऊपर जाना ऊपर कीजिए. All set? All set? अब सबसे पहले क्या करना है आपको? You have to go through each of the iterations, then you have to go through your solutions, okay? और हमको solution create करना है, उस solution की फिटनेस निकालनी है, फिटनेस निकालने को थ्रेशोल्ड निकालना है. अगर सॉल्यूशन का फिटनेस थ्रेशोल्ड से ऊपर रहेगा तो उसको क्या बोलना है? क्रॉसओवर, एल्स बोलना है यूटिलिटी. और क्लियर? या लेट्स डू इट. तो आखिरी में आ जाइए यहाँ पे, जो आपकी लास्ट लाइन था, वहां पे आने के बाद वी विल से फॉर I in range 0, ni. यहाँ पे ni क्या है? ni क्या है? नंबर ऑफ इटरेशन. हमने क्या रखी? 5. ni 5. Okay. Then for s in range 0, ns. और ns क्या है? What ns? Number of solution. Okay. ni is iteration, ns is solution. इटरेशन सॉल्यूशन में क्या फर्क है? एक इटरेशन में मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, ओके? और हर इटरेशन में आप चेक कर रहे हो कि सॉल्यूशन कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं. और क्लियर है ना? या अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ वी विल क्रिएट अ सॉल्यूशन, ओके? मुझे बताइए सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए मैं कितने वेट का मार्क्स करूँ? 5. लिखे थे हम लोगों ने ऊपर. याद है? 5 लिखे थे. तुमको क्या करना है? हमको ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जिसमें मैक्सिमम 5 वेट्स हो और पांचों वेट रैंडमली आ जाए. क्लियर? सो लेट्स डू इट.
come inside this for loop और initialize w equals to 0. फिलहाल वेट क्या रहेगा हम लोग का 0 for j in range 0 comma max 0 comma num w. नम w क्या है 5. तो हमने क्या किया यहाँ पे एक w को 0 से इनिशियलाइज कर दिया जो हम लोग का वेट आएगा और एक लूप लगा दिया j = 0 नम w. नम w क्या है हम लोग का 5. मैक्सिमम है 5. ओके. अब ये वेट कैसे आने चाहिए रैंडमली या तो randomly from that array of 10 5 to 25. ओके. तो डू दैट हम लोग को पहले एक इंडेक्स सेट करना पड़ेगा. we'll say idx equals to round random dot random multiplied by in bracket length of weights और लेंथ के बाद लेंथ का ब्रैकेट खत्म होने के बाद -1 क्योंकि हमको 0 से लेके कुछ हो रहा है to n - 1 so just make sure you follow this thing properly. I am doing it once again. idx equals to round क्योंकि हम लोग को जो रैंडम नंबर मिलेगा वो 1.5 1.6 मिलेगा. इंडेक्स 1 पॉइंट है तो इंडेक्स कैन बी 0 1 2 3 4 5. इसे राउंड करेंगे रैंडम डॉट रैंडम मल्टीप्लाइड बाय. अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ये स्टार्ट है राउंड ब्रैकेट. ओके. एंड यू हैव टू गिव ओवर हियर लेंथ ऑफ वेट्स राउंड ब्रैकेट के बाद -1. ठीक है. राउंड ब्रैकेट के बाद -1 और से ओके. या we'll see if this is correctly done or not. But I'm going to see the program like this. Then what we'll do is w equals to w plus weights of idx. जो हमारा सम निकालना है हमको w के अंदर है उसमें हमने क्या किया वही वेट को ऐड कर दिया w plus weights of idx. यहाँ पे ना अभी देखिए जब आप बोलेंगे रैंडम डॉट रैंडम लेंथ ऑफ वेट्स तो लेंथ ऑफ वेट्स कितनी है 1 2 3 4 5 राइट. तो इट कैन गिव मी 5 बट हमको 5 तक नहीं हमको 4 तक जाना है. दैट इज व्हाई वी आर गिविंग इट -1. ओनली इंडेक्स. ओके. अगर आप लोग ये का मैटलैब में करोगे तो आपको माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको इंडेक्स बन शुरू होगा. और clear with this? Yeah. So बोर तो नहीं हो रहा है? So now tell me, अभी तक हम लोग कहाँ पहुँचे हैं इस पूरे के पूरे फ्लो के अंदर? हम लोगों ने ये वाला पार्ट कर लिया, या हमने ये पार्ट डिफाइन कर लिया, मैक्स डिफाइन कर लिया. अभी हम लोग ये पार्ट पे हम लोग अभी वेट्स निकाल रहे हैं 5 वेट निकाल रहे हैं. अब फिर हमको नेक्स्ट क्या करना है f equals to max w minus sum of weight करेंगे नेक्स्ट स्टेप. ओके. सो w के अंदर बस सारे का वेट का सम आ गया. इतने वेट सारे. ओके. मुझे सारे के सारे वेट सेव भी करने पड़ेंगे आई के अंदर. या सो व्हाट आई डू इज जहां हमको लिखा है w equals to 0 वहां आई विल जस्ट से solve equals to blank array. solve the solution equals to blank array करेंगे w0 की जगह पे. और जहां मैंने वेट्स पर इंडेक्स से प्लस किया है वहां पर आके बोलेंगे solve dot append weights of I. weights of idx. इससे क्या हो जाएगा w के अंदर सम भी आ जाएगा और solve के अंदर सारे के सारे वेट्स एक एक करके आ जाएंगे. ओके.
All clear with that? Yes. Let's just repeat it once again. W में क्या आ जाएगा? W में आ जाएगा इसका सम, मतलब 5 plus 25 plus 30 plus 25 हो जाएगा W के अंदर, और सॉल्व में क्या आ जाएगा आपका 5 25 30 25 इंडिविजुअल. Clear with that? Yes or no? Clear हो गया चीज? Yes. अब इस लूप का काम लूप से बाहर निकलना है. लूप का काम तो हो गया. तो प्रेस एंटर एंड बैकस्पेस. बैकस्पेस दबाओगे तो लूप से बाहर आ जाओ. अब क्या करेंगे इसके बाद में? जो आपका W आया है, W में क्या आ गया कि इस सॉल्यूशन का सम कितना आ रहा है? ओके. अब हमको क्या निकालना है? फिटनेस निकालना है. क्या बोलेंगे? F equals to max weights or max W minus W. F में क्या आ जाएगा? Max weight minus weight. इससे फर्क पड़ जाएगा इसका फिटनेस क्या है. और क्लियर? और क्लियर? अब यहाँ तक रुक जाते हैं और अब प्रिंट करते हैं. F को देते हैं F में क्या वैल्यू आ रही है ताकि समझे कि आउटपुट क्या हो रहा है. ओके. I'll just say print solve print W and print F. यहाँ इसलिए हम लोग यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर पॉज कर रहे हैं 1 मिनट ताकि वो समझे कि इनके कोड लिखा होता है काम करने के लिए कैसे लिखे जा रहा है. ओके. तो जस्ट मेक श्योर कि यहाँ तक कोड काम कर रहा है. अगर यहाँ तक कोड काम कर रहा होगा और आप कोड रन करोगे तो you will get lot of solutions देंगे बहुत सारे, and you should get lot of fitness values, lot of weights. Okay. यहाँ तक किसी को कोई एरर नहीं आना चाहिए when you run the code. Should be able to get the output like this. देखिए मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? पहला 25 20 30 35 सम आ गया 110, फिटनेस आ गया -10. Similarly I am getting all the outputs. सबको दिख रहा है ये? अब इस आउटपुट में गलती है. जो आउटपुट आ रहा है ना, इसमें गलती है. सबको यहाँ तक क्या उसको कहाँ एरर दिखा रही है? प्लीज आगे आउटपुट कर देंगे.
नाउ मुझे बताइए सबका आउटपुट तो आ गया या हमारे पास इसका मतलब यहाँ तक के कोड में हम लोग क्या कर पा रहे हैं रैंडमली रेट चूज कर पा रहे हैं उससे सम निकाल पा रहे हैं और सारे बिल्कुल फिटनेस निकाल पा रहे हैं करेक्ट मुझे बताइए ये जो आपका आउटपुट आ रहा है शेल में यहाँ पर सम ऑफ द वेट कभी भी मैक्स वेट से होना चाहिए हो रहा है वो क्यों हो रहा है we'll see उसको तो सॉल्व करेंगे बाद में फॉर नाउ कंप्लीट द कोड देन वी सॉल्व दैट लेटर ओके इतना श्योर है कि ये कोड काम कर रहा है कोड में लॉजिकल एरर है लॉजिकल एरर क्या है कि जो हम लोग के सम ऑफ वेट आ रहा है दिस शुड नेवर गो अबव द मैक्स वेट को बजाय मतलब ये कि 60 कोडों के बाहर निकल जाए वो नहीं आना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ सैलरी कितनी आ रही है 1 लाख रुपए प्रोजेक्ट कर रहे हैं 1,10,000 ओके इसका ये मतलब वो नहीं होना चाहिए वी सॉर्ट दैट अब लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट अब ये प्रिंट वाले को आपको रखना है रखिए नहीं रखना निकाल दीजिए फर्क नहीं पड़ता मैं रख रहा हूँ प्रिंट वाले एंड वी मूव अहेड ओके सो यहाँ तक हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया है और अभी तक हम लोग सॉल्यूशन वाले रूप में हैं ये तो आप चेक करेंगे तो आप एस वाले रूप में भी हैं अब जो हमारा फिटनेस आ रहा था एफ हमको वो फिटनेस को भी स्टोर करना है और सॉल्यूशन को भी स्टोर करना है ओके तो क्या क्या करेंगे यहाँ पर देखिए हम लोग ने वेरिएबल का नाम ऊपर क्या दिया हुआ है फिटनेस इक्वल्स टू 0 ns सॉल्यूशन इक्वल 0 ns राइट तो क्या बोलेंगे यहाँ पे फिटनेस ऑफ s इक्वल्स टू f सॉल्यूशंस ऑफ s इक्वल्स टू सॉल्व इससे क्या हो जाएगा जो हमारी फिटनेस वैल्यू आएगी वो भी स्टोर हो जाएगी जो सॉल्यूशन निकाले वो स्टोर हो जाएगा फिटनेस will be able to store both the fitness and the solutions all done all done all done now अब देखिए हमारा जो पेन ब्रश था वहां पे आता है अभी तक क्या कर लिया हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने ये काम कर लिया we have found out all the solutions and we found out all the fitness values अब क्या करना है नेक्स्ट थ्रेशोल्ड निकालना है थर्ड फॉर्मूला क्या था sum of all the fitness divided by n okay so ये निकालना है तो कब फॉर लूप से बाहर निकलने के बाद तो प्रेस अ बैक स्पेस हियर बैक स्पेस दबाइए ताकि आप यहां पे आ जाए अब देखिए FTH is sum of fitness divided by length of fitness. FTH क्या हो गया? Sum of fitness upon length of fitness. All clear? Yes or no? Divided by length of fitness. तो मिल जाएगा मेरे को कि क्या वैल्यू आ रहा है sum fitness by length fitness. Clear? Now, वो सॉल्यूशन जिसका फिटनेस थ्रेशोल्ड से ऊपर है वो क्या हो जाएंगे जो सॉल्यूशन फिटनेस थ्रेशोल्ड के ऊपर है उसको क्या बोलेंगे हम लोग न्यूट्रिएंट ऐसे क्या बोलेंगे हम लोग क्रॉसओवर ओके तुम क्या करेंगे यहाँ पर फॉर s in range 0, ns
क्योंकि अब हम फिटनेस निकाल ली, हम लोग हर सोल्यूशन के पास जाएंगे, चेक करेंगे कि उसका फिटनेस भी क्या आ रहा है। अब इफ फिटनेस of S is more than FDH, so we have to do the crossover over here. So we have to do the derivation over here and we do crossover. Okay. अगर fitness of S is more than threshold, तो क्या करेंगे हम लोग? Yes. If fitness of S is more than threshold, तो क्या करेंगे हम लोग? Mutation करेंगे. S करेंगे crossover, right? अब what is the meaning of mutation? क्या मतलब? हम जो बोल रहे हैं Selects random new solution. क्या मतलब new solution, okay? लेकिन हम new solution तो ऊपर बना रहे हैं. Yes or no? तो हमको ये पार्ट ऑफ कोड में ऐसा करना पड़ेगा कि वो ऊपर वाले को कंट्रोल करे. Yes or no? ठीक है? सिंपल है. हम लोग कोई अगर इस पर्टिकुलर फिटनेस का वैल्यू थ्रेशोल्ड के ऊपर आ गया, इसका मतलब इसको क्या करना है, हमको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है. ओके, तो लोग यहाँ क्या बोलेंगे, म्यूटेट ऑफ S is equals to 1, else mutate of S is equal to 0. म्यूटेट नाम का वेरिएबल बनाएंगे हम ऊपर, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि अगर फिटनेस का वैल्यू थ्रेशोल्ड से ऊपर है, देन वी हैव टू से म्यूटेट ऑफ S is 1, व्हिच मींस इस सॉल्यूशन में म्यूटेट करना है, एल्स म्यूटेट ऑफ S is 0, इसको म्यूटेट नहीं करना है, क्रॉसओवर करना है. ओके, क्लियर विद दिस एवरीवन? यस. If that is clear, then we have to define a variable called mutate. और अगर वो म्यूटेट का वैल्यू 1 आ रहा है, तो मतलब उस सॉल्यूशन को म्यूट करना है, 0 आ रहा है तो म्यूटेट नहीं करना है. यस और नो? या. सो लूप में ऊपर आ जाइए आप, जहां आपने लिखा है फिटनेस इक्वल टू 0 एंड लिख दीजिए म्यूटेट इक्वल्स टू. अब मुझे बताइए, जब आप जीए शुरू कर रहे हैं, ओके, वेट इक्वल कोड पार्ट कोड करेंगे, जब हम जीए शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे क्या हम ये बोल सकते हैं कि सब सॉल्यूशन चेंज होंगे? When GA is being started, क्या हम ये बोल सकते हैं कि at that point of time all solutions will be changed or mutated? When we start the lesson, solution change नहीं होगा. हमारा solution इसका मतलब क्या होगा? सब solution change होंगे, all solutions will be mutated. इसलिए हम क्या करेंगे? Mutate equals to 1 into ns, मतलब initially all will be mutated into ns. Clear हुआ है चीज? Mutated 1 equals to 1 into ns मतलब क्या हुआ? Initially आप शुरू कर रहे हैं आपका for loop, at that time all solutions have to be mutated or modified. Clear? ये कंडीशन समझने के लिए ये समझिए कि अभी आप क्लास में घुसे और आपको 10 बच्चे पिक करने क्लास में जो कुछ काम कर सकते हैं और बस एक भी बच्चा नहीं है, तो अब क्या करोगे? रैंडमली पिक कर लोगे 10 किड्स. ओके, अब इन 10 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, 4 को क्या करोगे आप? म्यूटेट. तो आपको उस टाइम में म्यूटेट में क्या होगा? पहले के 6 में 1 होगा, बाकी 4 में 0 होगा. क्लियर विद दैट? नाउ सो विद दिस अजम्पशन हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब हम लोग लूप में आ गए, ओके, कौन से लूप में? एस वाई लूप में, ऊपर वाले. सबको यहाँ तक हो गया करके? यस और नो? और क्लियर? सबने वो लिख लिया लाइन 12 पे, v1 = 1. अब इस पर्टिकुलर कोड में वी आर डूइंग द मॉडिफिकेशन और वी आर क्रिएटिंग अ न्यू सॉल्यूशन. या अगर ये कोड कब काम करना चाहिए? जब म्यूटेट की वैल्यू 1 हो. 0 तो ये जरूर काम करना चाहिए नहीं. तो क्या करेंगे? if mutate of S is 0, अगर mutate of S 0 है, मतलब हमको तो म्यूटेट नहीं करना है,
तो ये लूप से बाहर निकल जाएंगे। या so what we will say, we will continue. Okay, क्या किया हमने यहाँ पर, if butane of H is 0, इसका मतलब क्या है, इस सॉल्यूशन को ब्यूटेट नहीं करना, तो क्या होगी, कंटिन्यू। कंटिन्यू मींस ये सॉल्यूशन स्किप हो जाएगा। क्लियर दैट? ओके, ऑल सेट। अब हम थोड़ा सा फिल्टरिंग करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का कौन सा सॉल्यूशन आ रहा है, कौन सा सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। ओके, अब नीचे प्रिंटिंग को रखा हुआ है कि निकाल दिए? प्रिंटर है कि निकाल दिए? है ना? तो यहाँ क्या कीजिए आप, जहाँ प्रिंट सॉल्व लिखा है ना, वहां पे आप एक और चीज कर दीजिए, यहाँ बोल दीजिए प्रिंट सॉल्यूशन परसेंटेज डी, परसेंट के बाद एस, तो मालूम पड़ जाएगा कौन सा सॉल्यूशन नंबर प्रिंट हो रहा है। सॉल्यूशन 1 है, 2 है, 3 है, परसेंटेज। क्लियर? इससे क्या मालूम पड़ जाएगा कौन सा सॉल्यूशन प्रिंट हो रहा है। और जहां आपने ऊपर लिखा है फॉर i एंडिंग 0,ni, इसके बाद लिख दीजिए प्रिंट इटरेशन परसेंटेज डी इन परसेंटेज साइन। क्लियर? दो प्रिंट लिखे हम लोगों ने, एक i और उसके बाद, और एक जो आपका f निकाला उसके बाद। All done? All done? Yeah? एक बार को रन किए देखिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है। सबका आउटपुट आ रहा है, यस और नो? या सबका आ गया आउटपुट यहाँ तक? ये एरर दिखा रहा है। You should get the output as iteration and solution. Okay, all done. अब तो आउटपुट पर एनालाइज करते हैं। इटरेशन 0 मतलब क्या है, हम लोग की फर्स्ट इटरेशन है, यहाँ पर सब सॉल्यूशन आने चाहिए। देखिए सॉल्यूशन 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, अप टू 9 भी आ रहा है। दिख रहा है चीज? यस क्लास? ओके, लेकिन इटरेशन 1 में देखिए सब सॉल्यूशन नहीं आ रहे होंगे। इटरेशन 0 में यू आर गेटिंग सॉल्यूशन 9, यस और नो? देखिए इटरेशन 1 जो आ रहा है, इस इटरेशन वहां पर सब सॉल्यूशन नहीं आ रहे होंगे। जैसे मेरे इसमें क्या हो रहा है, सॉल्यूशन 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर इटरेशन 2 में कुछ और आ रहा है, 3 में कुछ और आ रहा है। सबको दिख रहा है ये? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 6, 8 हाँ, इटरेशन 0 के अंदर यू आर गेटिंग ऑल सॉल्यूशंस, यस और नो? yes क्यों हो रहा है ऐसा? 10 बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वन को 10 बच्चे मिल गए। ओके, देखिए इटरेशन 2 में क्या हो रहा है, 4 काम के 4 काम के 6 काम के नहीं है, जो 6 काम के हैं वो चेंज होंगे, राइट? देखिए वही हो रहा है वहां पे, वही चेंज है, बाकी चेंज नहीं हो रहा। ऑल क्लियर विद दैट? यस और नो? या अब ये पूरा कोड खत्म होने के बाद एंड में मुझे जो सॉल्यूशन मिलना चाहिए वो कौन सा मिलना चाहिए, इसका फिटनेस हाई हो कि लो? At the end of the entire code, I should get which solution? इसका फिटनेस हाई चाहिए कि लो चाहिए? फिटनेस का फॉर्मूला क्या है? मैक्स वेट माइनस सम ऑफ वेट्स। ओके, अगर फिटनेस हाई है मतलब क्या है, इनका डिफरेंस हाई है, मतलब वो स्टार्ट उसका फुल नहीं हुआ है। अगर ये फिटनेस लो है, मतलब क्या है,
इसका डिफरेंस जो मतलब 60 फुल हो गया है, करेक्ट। तो मुझे क्या चाहिए सॉल्यूशन, इसका फिटनेस लो। तो आप कोड में सबसे आखिरी में आ जाइए। इतना कोड सबको समझ गया या? अब देखिए ये जो कोड बनाया ना आपने, ये कोड आप कोई भी जीए के लिए यूज कर सकते हो। सिर्फ आपको इनपुट चेंज करने हैं, फिटनेस चेंज करनी है, आगे को आगे सेम है। ओके, सो लेट्स सी। अब आप लूप के बाहर आ जाइए, मतलब आप सबसे लूप के एंड में आ जाइए, मतलब एट द लेफ्ट ऑफ योर कोड। ओके, सब पहुंच गए यहां तक या? यहां लिखिए min f equals to min of fitness। इससे क्या मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसकी फिटनेस मिनिमल है, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर s in range 0, ns, अगर फिटनेस ऑफ s is min f, तो print the solution of s and print that's it। अगर फिटनेस ऑफ s min f है तो print the solution of s and also print sum of solution of s। Print sum of solution। इससे क्या मालूम पड़ जाएगा मेरे को, इससे क्या मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन है जिसका फिटनेस मिनिमल है और उस सॉल्यूशन में कौन से वेट्स हैं और उसका सम कितना है। Once you are done, please run the code and check the output। सॉल्यूशन क्या आ गया मेरा 30 30 25 30 25 और सम कितना आ गया 140। ये सॉल्यूशन सही है गलत है? सॉल्यूशन कितना आ गया मेरा 30 30 25 30 एंड 25। सॉल्यूशन राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? आपका सैक कितना है 100, लेकिन आपने कितने से भर दिया उसको 140 और इसमें आउटपुट क्या दिया आपको जिसका हाईएस्ट वेट आ रहा है। क्यों दिया इसने ऐसा? क्योंकि आपको फिटनेस क्या था, मैक्स वेट माइनस वेट। ओके, कितना मैक्स वेट है 100 माइनस 140 इज माइनस 40, तो माइनस 40 इज द लोएस्ट, इसलिए इसका आउटपुट ये आ रहा है। समझे? तो थोड़ा कोड में लॉजिक चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपका जब वेट कम कर रहे हो, अगर सम करते करते वेट 100 के ऊपर निकल गया तो वाला वेट यूज नहीं करेगा। समझे क्या बोल रहा हूँ? जब आप सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं एट दैट टाइम यू टू ऐड अ कंडीशन। वो कंडीशन क्या रहेगी, जब आप वेट्स ऐड करते जा रहे हो स्टैक के अंदर, वेट तभी ऐड करो जब वो वेट ऐड करने के बाद स्टैक फुल ना हो जाए। अगर वो वेट ऐड में स्टैक फुल हो रहा है तो मतलब क्या वो वेट को ऐड नहीं करना है। ओके, सो कम टू द कोड। जीए समझे कैसे काम कर रहा है या? अब जो भी हम कर रहे हो लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हैं, लॉजिक बिल्डिंग से हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। लेट्स गो इनसाइड द main.py एंड सी। हम लोग का वेट यहां बन रहा है, sol इज ब्लैंक, इंडेक्स वेट और sol। यस और नो? वेट यहां हम लोग ऐड कर रहे थे, सॉल्यूशन क्या था? अब हमको वेट ऐड कब करना है सॉल्यूशन में? यस, W अभी था 30, फिर 30 आया तो क्या हो गया 60, 100 से कम है ऐड कर, फिर 30 ऐड हुआ 90, 100 से कम है ऐड कर दो, फिर 30 ऐड किया 120, 100 से कम है क्या? नहीं, तो वेट को बाहर निकाल दो। क्लियर? सो टू डू दैट, जहां पे लिखा है W plus weights of index, वहां पे आके एंटर दबाइए। Comment this point of in the code and over here we have to do some logic। okay, we'll see क्या लॉजिक करना है।
but over here we have to do our main code जहाँ पे हम लोग का stack code को नहीं होना चाहिए. Okay, to do that क्या करेंगे हम लोग? If W is more than match W, अगर 30 का लास्ट वेट आ गया 50 वाला और ये वेट की वजह से जो तो टोटल वेट है वो मैक्स वेट से ऊपर निकल गया, तो ये वेट हमको बाहर निकाल देना है. यस और नो? जब हमने प्लस किया था तो वेट ऐड हो रहा था, तो ये वेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेट बाहर निकल जाएगा. तो क्या बोलेंगे? W equals to W minus weights of IDX. क्लियर? इससे हम लोग का वेट बाहर निकल जाएगा और हमको अब ये वेट को प्रोसेस नहीं करना है आगे, राइट? तो बोल देंगे हमें कंटिन्यू. क्या बोल देंगे हम लोग? कंटिन्यू. क्लियर विद दैट? इफ W is more than match W, इसका मतलब क्या हो गया? ये जो हम लोग का वेट अभी ऐड हुआ है, ये वेट डेंजरस वेट है. ये ऐड करने के बाद स्टैक फुल हो जा रहा है, तो हमने क्या किया? वेट को उसमें से कम कर दिया और उसको बोले कंटिन्यू. इसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ेगा. नाउ रन द कोड एंड चेक आउट. See, at the end you might be getting some solution. I am getting 25, 25, 20, 20, 10. किसी कुछ और भी आ सकता है? Yeah, but in this particular logic of code, the logic will always make sure कि आपका वेट कभी भी मैक्स वेट के ऊपर नहीं चलेगा. Are we clear with that? Yeah. ये कोड मैं ऑनलाइन रिपॉजिटरी से डाल देता हूँ और आपको करने के लिए ताकि आप लोग उसको यूज कर सकें. Okay? इसमें इसको डाउट है? Yes or no? Okay. A simple exercise. What we have to do is we have to modify the weights now. Okay. First, I'll just copy the code and go into a online code. Yeah, class, please come on this particular website, online clipboard. मैं कोड को डाल दे रहा हूँ वहाँ पे. On your phone, you can just come on this particular thing और ये कोड को अपने फोन से कॉपी करके ऐड कर दीजिए. Okay. So come on the website onlineclipboard.online. Google पर सर्च कीजिए online clipboard. जो the first